नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. कांदी श्रीनिवास रेड्डी रमजानच्या उत्सवात सहभागी झाले. मुस्लिम बांधवांना ईदच्या शुभेच्छा दिल्या. शतचंडी महायाग तेजस्वीपणे सुरू. भाविक आल्याने दुर्गा मंदिरात आध्यात्मिक रूप प्राप्त. गटारात पडलेल्या व्यक्तीचा संशयास्पद मृत्यू. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू. आजच्या सविस्तर बातम्या. आदिलाबाद जिल्ह्यात ईद उल फितर रमजान सण मोठ्या थाटामाटात आणि भक्तिभावाने साजरा करण्यात आला. मुस्लिम बांधवांनी महिनाभर कडक उपवासाची दीक्षा घेतली आणि विशेष नमाजही अदा केला. त्यांनी मनापासून अल्लाची प्रार्थना केली. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कांदी श्रीनिवास रेड्डी या सोहळ्यात सहभागी झाले होते. त्यांनी काँग्रेस पक्षातील अल्पसंख्याक नेते आणि कार्यकर्त्यांची भेट घेतली आणि त्यांना सणाच्या शुभेच्छा दिल्या. तर त्यांना बोलवले होते. त्यांच्या घरी जाऊन त्यांना आनंदही झाला. कुटुंबातील सदस्यांनी त्यांचे स्वागत केले आणि त्यांना मेजवानी देऊन त्यांचे समाधान केले. सर्वांनी कांदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे मनापासून स्वागत केले आणि त्यांचे या मनापासून आलेल्या त्यामुळे हार्दिक अभिनंदनही केले. सगळ्यांसोबत सामील झाले, उत्सवात सामील झाले. तर विविध एकते रूपाने आपुलकीने त्यांनी हे सण एकत्रपणे साजरे करावे अशी त्यांनी इच्छा व्यक्त केली. या कार्यक्रमात काँग्रेसचे नेते व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. सलीम भाई चलो. भाई ना और एक भाई का दिल और जान से सब आपके लिए काम करना है. हम काम ही करें तो आपके लिए नहीं, आपके लिए काम करना है. दीदी सलीम भाई हार्ड वर्क कर रहे. हाँ हाँ. भाई इधर बोला था किधर भाई किधर भाई ओके. एक साथ एक आइडिया धर्मशाला गया. गोबर है अब ना जाओ. कितना मुझे देख उधर देख. नहीं सब लोग सर
ओके ओके सर उन्नर सर खान साहब इधर देखो खान साहब ईद मुबारक ईद मुबारक अब्रज भाई पापक मेरे निकाला 1 मिनट चाचा हाँ अरे इधर आओ ना बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको नहीं भूलना बोलते साहब आज ही बोले फोन क्या शहरातील श्री नवशक्ती दुर्गापीठम येथे 3 दिवस रुद्र साहित्य चंडी विश्वशांती महायाग शुक्रवारी भक्तिभावाने सुरू झाला। श्री किशन महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली मंदिरात विशेष पूजा करण्यात आली। देवीची विशेष पूजा केल्यानंतर महायाग सुरू झाला। तिरुपती येथील वैदिक विद्वानांच्या मंत्र उच्चारामध्ये पूजादी विधीमध्ये मोठ्या संख्येने भाविक सहभागी झाले होते। शुक्रवारी सकाळी गणपती पूजन, ध्वजारोहण, कलश प्रतिष्ठापना, गोपूजा व इतर भक्तिभावाने त्यांनी केली। त्यानंतर महायोग सुरू झाला तर विशेष पूजा केल्याने मंदिर परिसर आध्यात्मिक सौंदर्य प्राप्त झाले। या महिन्याच्या 14 तारखेपर्यंत हा महायाग सुरू राहणार असल्याचे श्री किशन महाराज यांनी सांगितले। जगाच्या कल्याणासाठी हा याग केला जात असून भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून देवीची कृपा घेतात असे त्यांनी सांगितले। त्यांनी सर्व लोकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि शुभ मेळाव्याच्याही शुभेच्छा दिल्या। ते म्हणाले की सर्व लोकांना मुबलक दुग्धजन्य पिकांसह समृद्ध जीवन जगता यावे यासाठी मी हे व्रत करत आहे। भागे नमस्ते बृहस्पते परिदीयादमत्म प्रमृणन्द मोडसा कामो हरामि मयि पुष्ट शिवे सर्वार्थ साधिके तुदे जगदम्बा विश्वभारतले परात्परे पापाहि मातागी माता महाराज నవదుర్గలు అట్లానే అన్నారా ఆ యొక్క చండీయాగమంతా వీక్ష ఉదగురన్న దృష్ట్యర్థతః తస్మై కర్మ కరిష్యామః చండీ హోమ కర్మని జ్వాలాముఖేన తద్వాలామభేద్యా సర్వసంభుజో తత్వం రజస్తమే ఏకామంతం ప్రాప్నోతి విష్ణుం అంటారు। హోమం దగ్గర కూర్చున్న దంపతులందరికీ దయచేసి అందరూ మీ అందరూ కూడా హోమములో పాల్గొనంట మసాలా ఏ మసాలా వేయాలి అదే రుచి ఉండాలి। లోపల వాళ్ళే కాదు మీరు కూడా అందరూ ప్రవర్తమానస్య మనం ఇప్పుడు అందరి పేర్లు మీ మనస్సులో ఒక్కసారి అమ్మవారికి చెప్పుకోండి। మా కుటుంబాన్ని రక్షించు, నీ అనుగ్రహం మా యందు ఉండాలి, ధైర్య विजय धर्मार्थ। एका व्यक्तीचा गटारात पडून संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला। आदिलाबाद शहरातील RS गार्डन जवळील जुन्या सातनाला काटमध्ये
शुक्रवारी ही घटना घडली। पोलिसांनी मैतीची ओळख शहरातील चव्हाण संतोष अशी केली आहे। मृतक रस्त्यावर भटकत आणि कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात सापडलेल्या वस्तू विकून आपला उदरनिर्वाह करत असे। मात्र पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तो अपघाताने गटारात पडला किंवा अन्यथा कारण हे आहे की तपास करत आहे। सकाळी तेथे गेलेल्या एका व्यक्तीला मृतदेह दिसला आणि त्यांनी तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली आणि तेथे पोहोचून परिस्थितीचा आढावा घेतला। स्थानिकांनी तपशील गोळा करून गुन्हा दाखल केला। केंद्रातील भाजप सरकारने अवलंबलेल्या धर्मांतर आणि जनविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी या महिन्याच्या 13 तारखेला डाव्या पक्षाच्या संयुक्त विद्यमानाने जिल्हा परिषद आयोजित करण्यात येत असल्याचे संयुक्त डाव्या पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले। शहरातील स्थानिक सुंदरय्या बिल्डिंगमध्ये शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते। केंद्र सरकारच्या लोकशाही विरोधी धोरणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी CPM, CPI आणि CPML, मास लाईन आणि CP न्यू डेमोक्रसी या महिन्याच्या 13 तारखेला सकाळी 11 वाजता स्थानिक BC संघ भवनात जिल्हा परिषद आयोजित करण्यात आली आहे। तर सांप्रदायिकता आणि भारतीय संविधानाचे संरक्षण, तर या संमेलनाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून संमेलन यशस्वी करावे असे आवाहन त्यांनी केले। तर CPM राज्य समिती सदस्य भंडारू रविकुमार आणि CPI राज्य सचिवालय सदस्य कलावेणी शंकर, CPI मास लाईन राज्य नेते V प्रभाकर, CPI न्यू डेमोक्रसी राज्य सचिवालय सदस्य T श्रीवास या परिषदेला उपस्थित होते। जनतेने लोकशाहीवादी आणि वामपंथी कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन विजयी व्हावे असे आवाहन त्यांनी केले। ఎండగడుతూ అలాగే బీజేపీ పార్టీ నుంచి భారత రాజ్యాంగానికి ఎదురవుతున్నటువంటి ప్రమాదాన్ని ప్రజలకు వివరిస్తూ భారత రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకోవాలనే సంకల్పంతో వామపక్ష పార్టీలు CPM, CPI, CPIML న్యూ డెమోక్రసీ, CPIML మాస్ లైన్ వామపక్ష పార్టీలు కలిసి రేపు BC సంక్షేమ భవనంలో జిల్లా సదస్సు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం। ఈ జిల్లా సదస్సుకు CPM పార్టీ నుంచి రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు బండారు రవికుమార్ గారు, CPI పార్టీ నుంచి కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు కలవేణి శంకర్ గారు, న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీ నుంచి T శ్రీనివాస్ గారు రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు, మాస్ లైన్ నుంచి V ప్రభాకర్ గారు రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు హాజరవుతూ ఉన్నారు। ప్రజలు శ్రేయోభిలాషులు లౌకికవాదులు భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాలని సంకల్పిస్తున్నటువంటి ప్రజాస్వామికవాదులు అందరూ కూడా రేపు ఆ సదస్సును అత్యధిక సంఖ్యలో హాజరై విజయవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। बालमृत्यू कमी करण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने प्रकल्प सुरू केला आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून पथदर्शी प्रकल्पाअंतर्गत आदिलाबाद जिल्ह्याची निवड करण्यात आली। देशभरातून सर्व 10 जिल्ह्याची निवड झाली असताना आमचा जिल्हा तेलंगणा राज्यातील आहे हे विशेष आहे। तर गरिबी, निरक्षरता आणि इतर कारणामुळे अशक्तपणा व कुपोषणामुळे नवजात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे। मागासलेले आदिलाबाद जिल्ह्यातील आदिवासी भागात आणि दुर्गम भागात या मृत्यूची संख्या जास्त आहे। कुपोषणाच्या विशेषतः गर्भवती महिला आणि बालकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे। देशात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक 1000 बालकांपैकी 15 बालकाचा एका आठवड्यातून मृत्यू झाल्यास परिस्थिती ही समजू शकते।
यामागील कारणाचा अभ्यास करून मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाययोजना आखल्या पाहिजेत। तर केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार ICMR आणि केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या वैद्यकीय संशोधन विभाग एकत्रितपणे जिल्ह्यात संकल्प प्रकल्प नावाचा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्याची तयारी करण्यात येत आहे। डॉक्टर B.R. आंबेडकर संविधान निर्माता आणि दुर्बल वंचितांसाठी आशेचा किरण जागतिक प्रतिभा आंबेडकर संघ संयुक्त संघर्ष समितीच्या संयुक्त विभागाने तर जयंती सोहळा पार पाडले असल्याचे समाजाच्या नेत्यांनी सांगितले। आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये कार्यक्रमाची माहिती जाहीर करण्यात आली। समितीचे अध्यक्ष अल्लुरी भूमन्ना म्हणाले की डॉक्टर आंबेडकरांची 133वी जयंती या महिन्याच्या 14 तारखेला शहरातील आंबेडकर चौकात होणार आहे। या उत्सवात आंबेडकरचे वकील, लोकशाहीवादी, विचारवंत आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते आणि त्यांनी त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यास सांगितले। तर ते म्हणाले की निवडणूक संहितेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आंबेडकर जयंती कार्यक्रम अधिकृतपणे करू शकतात की नाही हे खेदाची बाब आहे। విజయవంతం చేద్దాం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి జయంతి ఉత్సవాలు విజయవంతం చేద్దాం జై భీమ్ జై భీమ్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ की జై बोलो डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर की జై जय भीम జై భీమ్ जय जय। మరి అంబేద్కర్ సంఘాల ఐక్య పోరాట సమితి ఆధ్వర్యంలో మరి ఆదివారం 14వ తారీఖు మరి ప్రపంచ మేధావి ప్రపంచ జ్ఞాని మరి ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా ఒక మేధావిగా గుర్తించినటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క జయంతిని పురస్కరించుకొని సంఘం ఆధ్వర్యంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది మిత్రులారా। మరి ఈ సభా సమావేశానికి అందరూ కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగా మరి ప్రజలందరూ కూడా విచ్చేసి జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ విచ్చేసి ఆయా కుల సంఘాలు పెద్దలు అందరూ కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగా నిర్వహిస్తున్నాం కాబట్టి పెద్ద మొత్తంలో మరి ఈ సమావేశానికి విచ్చేసి మరి బాబాసాహెబ్ యొక్క జయంతిని మరి దిగ్విజయం చేయాలని చెప్పేసి మరి సమితి ఆధ్వర్యంలో అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం మిత్రులారా। మరి ఏదైతే కోడ్ ఉందో ఎన్నికల కోడ్ సందర్భంగా మరి ప్రభుత్వము అధికారికంగా నిర్వహించకపోవడం అనేది ఒక దురదృష్టము। ఒక దేశానికి వెన్నుముకైనటువంటి వాడు రాజ్యాంగ పిత మరి రాజ్యాంగాన్ని ఒక స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మనం ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి ఈ రోజులలో మరి బాబాసాహెబ్ గారి జయంతిని జరుపుకోవడం చాలా శోచనీయము। అట్లాగే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని
మరి ఏదైతే సంఘం ఆధ్వర్యంలో అంబేద్కర్ సంఘాల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో మరి ఖచ్చితంగా పెద్ద మొత్తంలో బాబాసాహెబ్ గారి 134వ జయంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. అంబేద్కర్ చౌక్లో మరి ప్రజలందరూ అంబేద్కర్ వాదులు, ప్రజాస్వామ్యవాదులు, అలాగే రాజ్యాంగ పరిరక్షకులు, యువకులు, ఆయా సంఘాల కుల సంఘాల పెద్దలు, గౌరవనీయులు అందరూ కూడా విచ్చేసి ఈ సభను దిగ్విజయం చేయాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా आव्हानिस्ता ఉన్నాం. आदिलाबादच्या खासदारकीच्या तिकिटाच्या आशेने निराश झालेले बड्या नेत्यांचे काय होणार हे कळत नाही. निवडणुकापूर्वीच्या त्यांच्या मौनामागे दडलेला अर्थ, त्या नेत्यांच्या मौनाचा अर्थ कोणालाच कळत नाही. भूतकाळ खासदार, आमदार म्हणून जिल्ह्याच्या राजकारणावर राज्य करणारे आता राजकीय भवितव्याची चर्चा करत आहे. तर विद्यमान खासदार सोयम बापूराव यांनी शिक्षकी कारकिर्दीत राजकीय क्षेत्रात प्रवेश केला आणि पूर्वी आमदार आणि सध्या खासदार म्हणून काम करत आहे. यावेळीही त्यांना तिकीट मिळेल अशी अपेक्षा असल्याने ते नेतृत्वाने त्यांची निराशा केली आहे. तर BRS मधून भाजपमध्ये दाखल झालेले माजी खासदार गेडाम नागेश यांना आदिलाबादचे खासदार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे घोर निराशा आणि नैराश्याने ग्रासलेले एका टप्प्यावर ते पक्ष बदलतील असा प्रचारही सुरू आहे. त्यांनी ज्येष्ठांची भेट घेतली. केंद्रात योग्य जागा शोधून नामनिर्देशित पदे देऊन आणि येत्या निवडणुकीत पक्षाच्या उमेदवाराच्या विजयासाठी कठोर परिश्रम करू अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. मात्र ते कुठेही पक्षाच्या कार्यक्रमात सहभागी होत नाही. सोयम बापूराव यांच्या मनात काय आहे, ते काय विचार करत आहे असे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहे. तर दुसरीकडे याच पक्षाकडून तिकीटची अपेक्षा असलेले आणखी एक नेते माजी खासदार रमेश राठोड आहे. बोधचे माजी आमदार राठोड बापूराव यांचीही हीच अवस्था आहे. आमदार असताना खासदारकीच्या आशेने त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. योग्य स्थान मिळणे अपेक्षित आहे. तर काँग्रेसचा विचार केला तर खानापूरचे माजी आमदार रेखा नायक हे खासदारकीच्या तिकिटाच्या आशेवर आहे. मात्र काँग्रेस पक्षाने अनेक निकालानंतरची सामाजिक समीकरणे आणि सर्वेक्षणाचे निकाल पाहता आत्राम सुगुना यांचे नाव फायनल केले आहे. तर याची आत ज्येष्ठ नेत्यांची परिस्थिती आता बेताची झाली आहे. राजकीय भवितव्य शंकास्पद आहे. जिल्ह्यातील कृषी बाजारांनी यावर्षी उद्दिष्ट ओलांडले आहे.
कापूस, सोया, हळद आणि इतर पिके या पिकांच्या विक्रीतून कोट्यवधीचे उत्पन्न लक्ष एवढे जास्त झाले आहे। तर जिल्ह्यातील आदिलाबाद बाजारपेठेची सर्वाधिक आवक होते। 5 बाजारपेठेचे एकत्रित उत्पन्न रुपये 17.68 कोटी होते। त्यापैकी आदिलाबाद बाजाराने 9.72 कोटी कमावले। खाजगी व्यापारी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रात संस्थांनी विक्रीचे आयोजन केल्यामुळे बाजारांना शुल्काच्या रूपात उत्पन्न मिळाले। यावर्षी 25 केंद्रे सुरू करण्यात आली असून सीसीआयने कापूस खरेदी केला आहे। तर खाजगी क्षेत्र आणि सीसीआयने यावर्षी 46.88 लाख क्विंटल कापूस विकला असल्याची माहिती आहे। बाजारातील निम्म्याहून अधिक विक्री कापसाची झाल्याने अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। कंदी श्रीनिवास रेड्डी रमजानच्या उत्सवात सहभागी झाले। मुस्लिम बांधवांना ईदच्या शुभेच्छा दिल्या। शतचंडी महायाग तेजस्वीपणे सुरू। भाविक आल्याने दुर्गा मंदिरात आध्यात्मिक रूप प्राप्त। गटारात पडलेल्या व्यक्तीचा संशयास्पद मृत्यू। पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।